So hi everybody, how are you all of you? I hope you all are fine. And last lecture I explained you the definition of accountancy. Okay, now in this part we are going to understand three things. First, the objective of account, and then advantage, and then its limitation means the disadvantage. Okay, so let's talk first objective of account. Objective means the uddeshya. What are the aim, what are the objective to maintain the books of account. Books of account बनाने के लिए क्या aim है, क्या objective है, that we will try to understand first. Okay, so first is the permanent record. Okay, when you write anything, it work as a record, it act as a evidence in the court of law. कानून की नज़रों में उसकी जो है महत्वता बढ़ जाती है, इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. सो मेनी टाइम्स आई गेव दिस एग्जांपल कि आप जो है क्या कहते हैं, मारने वाले की लाठी को पकड़ सकते हो लेकिन बोलने वाले की जबान को नहीं पकड़ सकते हो. व्हाई? बिकॉज लाठी दिखाई देती है, जबान दिखती नहीं है. सेम वे, इफ समथिंग इज रिकॉर्डेड, इफ इट इज रिकॉर्डेड, देन यू कैन रीड इट, you can understand it. If someone is speak, maybe possible you will forget, or someone will say मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था. Okay, so it act as a permanent record. Whenever you need the reference, you can just flap the pages and you can see the record. Okay, so it is a permanent record. Second, to know the effect of each transaction. Okay, when you maintain the books of account, you read and as well as you write each and every transaction. So at that time you know what will be the debit effect of the particular transaction, what will be the credit effect of the particular transaction. Suppose if any mistake has occurred, then you are able to dictate if it is record. If it is not record, okay, you are not able to know the effect. What will be the effect? Okay, next, to know the influence factor. Means whatever parties are there related to the accounts, you are able to know that. आपको मालूम पड़ेगा कि भाई आपने किसके साथ ट्रांजेक्शन किया था. If you have recorded it, if you have not recorded, then so many transactions are taken place in a day. How you are able to determine to whom what you have given, someone has what you have, someone has what paid to you. Okay, and that is the reason to know the influence factor. Next, to determine the tax liability. If you are maintaining the books of account systematic में सही तरीके से बना रहे हो, आपने कोई उसमें गड़बड़ नहीं की है, then definitely you are able to know how much you are liable to pay the tax. गवर्नमेंट को आपको कितना टैक्स चुकाना है. That is only possible if record is done in systematic and perfect way. If it is done, then only you are able to know how much how much tax is payable. Okay, so that is the objective. Next, to know the quantum of payable. Okay, so many creditors are there. How much you have to pay, if you will record, then only it is possible. So that is the object of account, to maintain the account, that you know what is your payable. Next is to know the quantum of receivable. Means if something you have given to someone, or you have sold the goods, then you have to receive the money. Okay, if it is recorded systematically, then only you are able to know, otherwise not. Okay, next, to measure the profitability of business. If account is recorded systematic way, it is work, then only you are able to know what profitability is there in the business, whether you are suffering from loss or you are enjoying the profit. Okay, so that is the objective. And next is to know the economic status of the business. If account is recorded systematic way, children, then only you are able to know the financial status of the business. Means what is your position? You are in the position of solvency or insolvency. Okay, that you are able to determine. Okay, and all these are the objective. And after that, the next one is the advantages. What are the advantages? क्या फायदे हैं अकाउंट को मेंटेन करके, क्या बेनिफिट मिलता है. So whatever objectives are there, that same are the advantages. वही सारे के सारे advantages हैं. So let's talk it one by one. First, availability of accounting information. Means if something is written, then only you will get the advantage of that. Okay, you can take the reference. So many other things you can do with the help of record. If record is not there, then it is just like a fluke. Okay. Next, to know the profitability. Of course, earlier we discussed about it. If account is maintained systematically, then only you will able to know how much you have to pay, how much you have to receive, what is the situation exactly business, and how much you have saved, what is your profit. Okay, next,
to know the financial status. Of course, if account is recorded systematically, then only you are able to know what is your exact financial status of the business, whether you are enjoying profit or you are suffering from the loss. Next, tax planning. Of course, if account is maintained systematically, if account is done systematically, there is no error, there is no fraud, there is no mistake, then how much taxes are payable to government, how much liable you are to pay the tax, that you are able to know. Next, valuation of the business. See, that is the most important thing. If you are recording accounts systematically, then only you are able to know what is exact value of your assets, what is exact its market price. You can compare all that things. Next, decision making. Okay, if you are maintaining the account systematically, then you know what is your financial position, and with the help of that you can think about your business, whether you want to expand it or not, how much loan you want to take. Okay, that all thing is possible if you are recording the account, and you can take the appropriate decision. Next, as an evidence. I earlier told you this thing. It act as a record in the court of law. It act as a evidence. अगर कल किसी ने आपके साथ कोई भूल कर दी, कुछ मिस्टेक कर दी, किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, okay, someone is sue on you, then what you will do? Okay, अब किसी ने आपको बोल दिया भाई this person has done fraud with me, okay, or someone has said भाई इसने तो मेरा पेमेंट ही नहीं किया था, what you will do at that time? Okay, and someone is आपको कोर्ट में जो है लेके गया, then what you will do? If record is there, then you can show it as a evidence. If record is not there, then definitely you will consider as a faulty person, and what will happen? You know that very well. Next one, comparison with past transaction. Yes, it's a historical record, so you can compare with past. If suppose a mistake you have committed present, okay, and future you are enjoying a nice profit, then you can compare भाई क्या हम लोगों से मिस्टेक हो गई, क्या भूल हो गई, क्या हम लोगों ने ऐसा किया जिसकी वजह से हमारा बिजनेस बराबर चल नहीं रहा है. So you can compare if record is there. If not record, not it is mentioned there, or not it is recorded appropriately, then automatically we have to suffer. Next, moral control. This is the most important thing. When you write the account on so many people, okay, its effect psychologically, वो आपको मानसिक रूप से असर करता है. वो उसको मालूम पड़ता है कि भाई आई हैव सपोज कमिटेड द मिस्टेक, इफ आई विल डू इमीडिएटली मैं पकड़ा जाऊंगा. बराबर है. तो वन टाइप ऑफ मॉरल कंट्रोल इज डन ऑन द अकाउंट इफ यू मेंटेन इट सिस्टमैटिक वे. सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस. नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज द लिमिटेशन, मर्यादा. बराबर है. अकाउंट हर एक टॉपिक की अपनी लिमिटेशंस है, अपनी मर्यादा है. मर्यादा मीन्स कहाँ पे हमारी पहुंच नहीं है, दैट इज आर मर्यादा, दैट इज द लिमिटेशन. सो अकाउंट की भी लिमिटेशन है. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. ओके, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इवन दो इट हैज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. कंफ्यूज? यस, मुझे मालूम था कंफ्यूज डेफिनेटली आप हो गए, बट आई विल टेल यू हियर. आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज वन very honest, loyal one worker is there in your organization. आपके साथ में सालों तक उसने काम किया है, he left the job. No doubt आपको उसके जाने से आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक ईमानदार आदमी की कीमत क्या हो सकती है? उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है. He is valuable asset of the organization. If this kind of person is gone, definitely it is indirectly affect your business. आपके बिजनेस के ऊपर वो असर डालता है, और ऑटोमेटिकली क्या होगा, कहीं पर आपके बिजनेस की जो है हालत पतली हो जाएगी. बट दैट टाइप ऑफ लॉसेस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग. हम उसे अकाउंट में लिख सकते नहीं है. ओके, ध्यान में आ रहा है? नेक्स्ट इज स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी. वी नो दैट वन वैल्यू इज दैट विच इज मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, and second value is there which is going on the market, and we always do the work as per the account. Market value we never consider, and what happened due to that? One clashes has rise.
हमारा प्रॉफिट कुछ और बता रहा होता है और रियल में पोजीशन कुछ और होती है, ड्यू टू दैट रीजन दैट टाइप ऑफ एरर, ओके, इट इज अ नेचुरल, इट इज नॉट मैन मेड, सो दैट टाइप ऑफ लिमिटेशन it can't be clear, okay, that is the limitation of accountancy. Next, historical transaction. Historical transaction means once you mention any mistake, okay, you can't rectify it in simple way. Lastly also I told you, if I am writing like this way, suppose I have written cash account debit to so and so account, and this is wrong, so I can't do like this way in account. It is considered as a fraud. ये गलत माना जाएगा. Is it clear? So this type of thing, once you have done, it's finished, खत्म हो गया. उसके बाद में आपको गुजराती में कहते हैं नवी गिले नवो डाव. It is just like that you have to follow, and that is the historical transaction. And second aspect of historical transaction is that money value, okay, say the depreciation. आपकी मशीनरी की एक वैल्यू आपकी मशीन में बता रहा, मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ और है, ओके, सो दैट टाइप ऑफ आल्सो रिकॉर्ड इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटेंसी. नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू. मैंने मशीन के मामले में आप लोगों को बताया, सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर. एंड नेक्स्ट, यूज ऑफ एस्टिमेट. आपको बहुत बार जो है आप एस्टिमेट करते हो, इट मे बी रॉन्ग. मान लो आपने एक एग्जांपल दे रहा हूँ बैड डेट रिजर्व का, आपने 700 रुपए का आपने एस्टिमेट लगाया और खर्चा सिर्फ जो है 200 रुपए का ही हुआ, तो भी आपका 400 रुपए ज्यादा का लॉस बता रहा है. अब अकाउंट में ज्यादा का लॉस बता रहा है, एक्चुअल में है नहीं. इज इट क्लियर? सो दैट इज द लिमिटेशन, यू कांट डू एनीथिंग देयर, आप कुछ नहीं कर सकते. एंड लास्ट, दैट इज द ड्यूअल स्टैंडर्ड. ड्यूअल स्टैंडर्ड का भी जो अभी ऊपर वाला एग्जांपल दिया, वही यहाँ पे वही चीज एप्लीकेबल होके आती है कि ड्यूअल स्टैंडर्ड के अंदर एक एस्पेक्ट जो मार्केट में चल रही होती है, सेकंड एस्पेक्ट जो आपकी एक्चुअल बिजनेस पोजीशन में है. बिजनेस पोजीशन हाई होने के बावजूद भी अकाउंट की बुक उसको लो दिखा रही होती है, ओके, एंड दैट इज द ड्यूअल स्टैंडर्ड. सो दिस इज द सर्टेन लिमिटेशन, ओके, यू कांट मेक इट क्लियर, यू हैव टू सफर इट, और आपको उसके साथ चलना ही पड़ता है. उसके बावजूद इनको भूल जाएगा, जस्ट फॉरगेट इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, you have to see the advantage. I so many times I say this thing, अगर कोई इंसान है बराबर, अगर उसमें एक मिस्टेक है, एक भूल है, और उसकी 10 क्वालिटी अच्छी है, तो हमारी एटीट्यूड ये होती है हम एक मिस्टेक को पकड़ के रखते हैं, क्वालिटीज को भूल जाते हैं. बट हियर यू हैव टू जस्ट कीप द क्वालिटी इन योर माइंड. व्हाट आर द एडवांटेजेस? डिसएडवांटेज बोल के यार वी आर नॉट गोइंग टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दिस इज नॉट द प्रॉपर एटीट्यूड. ये नहीं चलेगा. ओके, वी हैव टू मेंटेन बिकॉज it act as a record, okay, and it give the systematic structure to the business. And here one topic is we are clearing now. Next one, okay, accounting is the business of language, उसके बारे में बात करेंगे. Okay, second is account is art or account is science. What is that exactly? उसके बारे में बात करेंगे. The different terminology, I think so more than 20 to 25 terminologies are there. Okay, so we will divide it into 2 parts. So next 2 lectures we will finish this chapter. Okay, bye, see you.